Hello everyone, I am Lakshya and in this lecture series I am going to talk about the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Suraksha Sanhita 2023. Basically, this Sanhita has replaced the Code of Criminal Procedure 1973. The act the bill has been passed by both the houses of parliament, and it has also received the president assent. But the enforcement date is yet to be notified. So basically or eventually we have to study this Sanhita. So this lecture series is going to help everyone who is going to read this Sanhita for the first time, and also the law student who has just entered the law schools. Uh, we will go with this lecture series according to the section. We will start with the section number 1 and we will try to read all the section, that is till section number 531. So total section in this particular act is 531. Before starting with this act, we have to understand the basic difference between the substantive law and the procedural law. Basically, the substantive law, in easy terms, define the rights and liabilities of the parties. And in the context of criminal law, substantive law defines an offense and their punishment. फॉर एग्जाम्पल देर आर टू पर्सन ए एंड बी, ए मर्डर्स बी. अब हमें पता है कि ए ने बी का मर्डर किया है, और व्हाट इज़ द पनिशमेंट दैट इज़ गोइंग टू बी गिवन टू ए, ये भी हमें पता है क्योंकि ये हमें आईपीसी और बेसिकली द न्यू भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है. बट हमें ये नहीं पता कि प्रोसीजर क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, अब इंफॉर्मेशन कौन देगा पुलिस को, एंड पुलिस विल हाउ विल पुलिस गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द केस फर्दर, and after that what will be the procedure that is going to be followed by the court to award the punishment, to award the sentence to the accused person. So all these things are given in a procedural law, and in this case the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 is going to be the procedural law for the criminal act, or for the acts done by a person which is an offense defined under the Bharatiya Nyay Sanhita. So now we will start with the BEAR Act. This act is known as the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, a bill to consolidate and amend the law relating to criminal procedure. Basically, it is an exhaustive act जो भी procedure होगा criminal law का और भारतीय न्याय संहिता का, वो इसमें दिया गया है और हमें कहीं और या किसी और एक्ट में देखने की ज़रूरत नहीं है. Also not just only about the Bharatiya Nyay Sanhita, but the other acts which define the offense and their punishment also, in which the procedural aspect of that particular act is not given. We have to look at the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. ये हम सेक्शन नंबर 4 and 5 में पढ़ेंगे आगे चल के. Now, be it enacted by the Parliament in the 74th year of Republic of India as follow. Now, chapter number 1, preliminary. This act may be called as Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. The provision of this Sanhita, other than those related to chapter number 9, 11 and 12, thereof shall not apply to the state of Nagaland and to the tribal areas. So basically the provision except chapter number 9, 11 and 12 will not apply to the state of Nagaland and the tribal areas. In chapter number 9, 11 और 12 के अलावा कोई भी प्रोविजन स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होगा. बट देयर इज अ प्रोवाइजो, बट द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट may by notification in the apply such provision or any of them to whole of the part of the state of Nagaland or the such tribal area as the case may be, with such supplemental, incidental and consequential modification as may be specified in the notification. Basically, the state government has the power to apply the provision of this act to the concerned state of Nagaland and the tribal areas with the supplemental, incidental, consequential modification according to the suitable needs of this particular state
ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरिया, स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की ये प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट अप्लाई कर सकती है वहाँ के लोगों पे, वहाँ के प्रोसीजर लॉ पे। Now explanation is given in this act is in this section tribal areas means the territories which immediately before 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam as referred to in paragraph number 20 of 6th schedule of the constitution. Basically इसमें define किया गया है कि tribal areas क्या है, जो कि हमें पता चलेगा जो paragraph 20 of 6th schedule of constitution में दिया गया है वही ट्राइबल एरियाज होंगे जिस पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे. नाउ इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. नाउ द subsection number 3, it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. So this date of enforcement has not been decided yet or has not been declared yet by the central government. तो अभी हमें नहीं अंदाज़ा कि ये जो एक्ट है ये कब enforce होगा. So we will have to wait for some time until the official notification has been decided or has been declared by the state by the central government. Now section number 2, definition clause. Definition clause किसी भी एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जहाँ भी पर्टिकुलर वर्ड जो डेफिनेशन क्लॉज में दिए गए हैं और उस एक्ट में यूज हुए हैं तो हमें वो पर्टिकुलर वर्ड डेफिनेशन क्लॉज के कंटेक्स्ट में ही पढ़ना है. हमें जाके डिक्शनरी नहीं खोलनी, हमें जाके किसी और एक्ट में नहीं देखना, हमें सबसे पहले जाके डेफिनेशन क्लॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट में ही देखना होता है ताकि हमें पता चले कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है. एंड section number 2, now in this section unless the context otherwise require audio video electronic means 2a. Basically this definition has not been provided in the earlier act of 1973. Audio video electronic means shall include use of any communication device for the purposes of video conferencing, recording of processes of identification, search and seizure of evidence, transmission of electronic communication, and for such other purposes and such other means as the state government may by rules provide. So basically every electronic device which can record the audio or video and through which we can record the evidence or seize the evidence, all of those things will come under the definition of audio video electronic means. It can include your mobile phones, camera, audio recorders and everything through which we can communicate with each other. So basically audio video electronic means all the modern technology, modern devices through which we can communicate with each other. Now section number 2b, clause 2b, bail. In the earlier act, bail has not been defined exhaustively, but in this act the legislature has defined bail in a precise manner so that we can understand the meaning of bail easily. Bail means release of a person accused of a suspected or commission of an offence from the custody of law upon certain condition imposed by an officer or the court on executing such person of a bond or a bail bond. Basically bail is a condition or the order by which an accused person can be released from the custody of police officer or from the custody of court, and this order has can be given by officer or the court itself on execution of a bond or a personal bond. And what is a bond or a bail bond? We have to see the clause number D and clause number E. So clause number 2D, bail bond means undertaking for release with surety. Bail bond basically means, for example, there are two persons, A and B. A committed offense against B and now A has been arrested by the police. He wanted to release upon a bail and court order him to execute a bail bond. अब bail bond में क्या होगा? एक bail bond में एक third person होगा surety, जो कि कोई भी हो सकता है. एग्जाम्पल accused का रिश्तेदार हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, या accused का स्पाउस हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जो कि accused की गारंटी लेगा कोर्ट के सामने, ऑफिसर के सामने, कि जब भी कोर्ट उसे बुलाएगा तो श्योरिटी ये मेक श्योर करेगा कि अक्यूज्ड कोर्ट के सामने उस पर्टिकुलर डेट पे अपीयर हो. Now we have to see the meaning of bond, which is given to clause E.
Bond means a personal bond or an undertaking for release without sureties. So जब पर्सनल बॉन्ड पे अक्यूज को रिलीज किया जाएगा, उसका मतलब होता है कि अक्यूज से कुछ अमाउंट ऑफ मनी कोर्ट में रखवा ली जाएगी। एंड इफ अक्यूज्ड डजंट कम ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, जिसमें उसे कोर्ट के सामने ऑफिसर के सामने अपीयर होना होता है, तो वो अमाउंट को फोरफीट कर लिया जाता है। बॉन्ड में विदाउट श्योरिटी होता है, मतलब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। अक्यूज के पर्सनल मनी और अक्यूज की पर्सनल अंडरटेकिंग होती है, जिसके बेसिस पे उसे रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम द कस्टडी। नाउ 2C, bailable offense means an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense. So basically the definition of bailable offense is not exhaustive. It only defines that a bailable offense is an offense which is defined in first schedule. So जो भी ऑफेंस को फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल डिफाइन किया गया है वो बेलेबल है, एंड जिसे नॉन बेलेबल वो नॉन बेलेबल है। एंड नाउ वी कैन सी फर्स्ट शेड्यूल इन दिस एक्ट। सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट शेड्यूल। For example, section number 58B, and it has been defined as bailable. The also schedule contains the code by which the offense is triable, and whether it is a cognizable and a non-cognizable offense, and whether imprisonment of 3 years and fine is also given. Imprisonment भी बताई गई है इस schedule में कितनी होती है इस particular offense की। तो schedule is very important, and this particular act 2 schedules are given. number first schedules में ये सब चीज़ें दी गई हैं, and second schedule में forms दिए गए हैं, for example forms of warrant and forms of arrest and all of that things. Now definition 2F, चार्ज की भी कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज और व्हेन द चार्ज कंटेन मोर देन वन हेड। सो बेसिकली जहाँ भी वर्ड चार्ज डिफाइन किया गया है उसमें ज़रूरी नहीं है कि एक ही चार्ज हो, उसमें हो सकता है डिफरेंट चार्जेस भी लगाए गए हों। फॉर एग्जांपल किसी ने ऑफेंस कमिटेड किया हाउस ट्रेसपास का एंड फिर मर्डर का, तो चार्ज जब भी वर्ड यूज़ होगा तो उसमें हाउस ट्रेसपास एंड मर्डर दोनों इंक्लूडेड होंगे। सो दिस इज टू। Now the definition 2G, cognizable offense. It is the most important definition given in this particular act. Cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means the case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being, force arrest without a warrant. So basically जो cognizable offenses है वो थोड़े grave nature के offenses होते हैं जिसमें immediate action required by the police officer. So उसमें इतना टाइम नहीं होता कि पुलिस वाले क्या बोलते हैं मजिस्ट्रेट के पास जाए वारंट लेने से, इसलिए उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास पावर है कि वो बिना अरेस्ट वारंट के अक्यूज को अरेस्ट कर सके। इवन दे हैव आल्सो द पावर टू इन्वेस्टिगेट द कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट, which we will study in the later part of this act. So this is the meaning of cognizable offense and cognizable case. Now we have to look at the definition 2H. Complaint means an allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this SANHITA that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report. So basically जब भी word complaint इस act में appear होगा हमें ये याद रखना है कि ये word complaint magistrate के context में use किया गया है। So basically complaint में complainant जो होता है वो orally or in writing magistrate को complain करता है ताकि वो कोई एक्शन ले अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन, वेदर द अक्यूज पर्सन इज नोन और अननोन इट डज नॉट मैटर, एंड जो कंप्लेंट है वो डज नॉट इंक्लूड, वो पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करती। एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन फॉर दिस डेफिनेशन। Explanation: a report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complaint. So basically जब भी एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करेंगे पुलिस ऑफिसर एंड उस पुलिस रिपोर्ट में डिस्क्लोज होगा कि जो ऑफेंस के लिए कंप्लेंट, जो ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेट किया गया है वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को एज ए कंप्लेंट डील करेंगे, एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम दैट पुलिस रिपोर्ट
is filed shall be deemed to be a complainant, and उस पुलिस ऑफिसर को हम एक कंप्लेनेंट मानेंगे. Now 2J, electronic communication. This definition was also not given under Code of Criminal Procedure 1973. It is also been added in this new act. 2I, electronic communication means communication of any written, verbal, pictorial information, video content transmitted or transferred, whether from one person to another or from one device to another, from one person to a device or from one device to person by means of electronic device, including a telephone, mobile phone or other wireless telecommunication, or a computer, audio, video player, camera or any other electronic device, electronic form and maybe specified by notification of साइड सेंट्रल कम. सो बेसिकली जितनी भी हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं आज के टाइम पे, फॉर एग्जांपल हम वीडियो शेयर कर रहे हैं या वीडियो ऑडियो मैसेजेस शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और थ्रू ईमेल, ऑल दीज थिंग्स आर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. इवन अगर आप कोई मैसेज अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप में ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है. So this is kind of easy definition. Now 2J High Court, this definition is not that much important, is not much important for the examination point of view, so we can leave this definition. Now 2K inquiry, it is an important definition. Whenever the word inquiry comes under this act, we have to understand that this definition is used in the context of a court and a magistrate only. So basically inquiry means every inquiry other than a trial. Other than a ट्रायल नहीं है इंक्वायरी, हमें ये बात याद रखनी है. कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, जो भी इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा कंडक्ट करी जाएगी वो इंक्वायरी है अंडर दिस एक्ट. नाउ इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि वर्ड इंक्वायरी मजिस्ट्रेट और कोर्ट के कंटेक्स्ट में यूज किया गया है, द वर्ड इन्वेस्टिगेशन इज यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर ओनली इन दिस पर्टिकुलर एक्ट. सो वर्ड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस conducted by a police officer or by any other person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. So जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाएगी या फिर किसी और पर्सन के द्वारा जो कि ऑथराइज है बाय अ मजिस्ट्रेट, वो सारी चीज़ें, वो सारे कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो भी होगा वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्लूड होगा, वो इन्वेस्टिगेशन कहलाई जाएगी. एक्सप्लेनेशन, where any of the provision of a special act are inconsistent with the provisions of this Sanhita, provision of the special act shall prevail. जहाँ पे भी कोई स्पेशल एक्ट है और उसमें दिए गए प्रोविज़न और इस संहिता के अंदर दिए गए प्रोविज़न इन कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर है, तो जो स्पेशल एक्ट के प्रोविज़न है वो प्रिवेल ओवर करेंगे इस संहिता के प्रोविज़न पे. सो इट इज़ ऑल्सो ए जनरल रूल कि स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल ओवर अ जनरल लॉ. Now, section number 2M, judicial proceeding, includes any proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. So basically जो भी proceedings है judicial proceeding, उसमें evidence है वो लिए जाते हैं legally on oath by the court or by any other officer of the court. So it is a judicial proceeding. Now local jurisdiction 2M. In relation to a court or a magistrate means the local area within which the court or a magistrate may exercise all or any of his power under the Sanhita, and such local area may comprise the whole of the state or any part of the state or state government may by notification specified. So local jurisdiction is basically an area over which a court or magistrate exercises power. कि इस एरिया में अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो वो किसके द्वारा ट्राई किया जाएगा या उसका कॉग्निजेंस कौन लेगा, उसकी कंप्लेंट कहाँ पे फाइल होगी, चार्जशीट किस कोर्ट में फाइल होगी, वो लोकल ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन किया जाता है, लोकल ज्यूरिसडिक्शन में इंक्लूड किया जाता है. और ये जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन है वो बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिफाइन करती है पर्टिकुलर कोर्ट्स की, और अकॉर्डिंग टू द एरिया, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ये डिफाइन किया जाता है. नाउ टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे कि अभी हमने पीछे टू जी में कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन देखी, वैसे ही 2O में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया है. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एन
non-cognizable case means the case in which a police officer has no authority to arrest without a warrant. So basically ये cognizable offense का उल्टा है. इन cases में पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं है टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट. ये कम ग्रेव होते हैं ऑफेंसेस, ये थोड़े लाइट ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं की गई. उन्हें जनरली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में डाला गया है. बट ये जो कैटेगरी है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है कौन सा नॉन कॉग्निजेबल, वो हमें फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन किया गया है, जो कि अभी हमने पहले देखा कि फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल भी है और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है एंड कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है. 2P notification means a notification published in the official gazette. So it is a first lecture के लिए बस इतना ही रखते हैं, and we will continue with the second lecture. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you guys.